अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। तो इसमें बयान करेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, साइलेंट फीचर हो गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये, डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल थी, फेडरल स्टेट था, रिजिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रेफरेंडम, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। द 1962 Constitution was drafted by the team appointed by the अयूब खान। अयूब खान ने ये ड्राफ्ट किया था 1962 में। ऑल वर्क्स वर डन सीक्रेटली एंड देन ऑल सडन कॉन्स्टिट्यूशन वाली फोर्स इन था और सडनली इसको इन्फोर्स कर दिया गया था ज़बरदस्ती। Constitution of 1962। The Constitution of 1962 was enforced on June 8, 1962। The Constitution was forcibly given to the people। ये इन्फोर्सबली लोगों को दे दिया गया था, या इन्फोर्स करा दिया गया था 8 जून 1962 को। इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कंसिस्ट ऑफ 250 सेक्शंस एंड शेड्यूल। इस वाज इन रिटन फॉर्म। और दूसरा ये रिटन फॉर्म में था। दूसरी इसकी हेडिंग है डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। पाकिस्तान डिक्लेयर डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल क्या था? 1962 प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ काउंसिल। Federal State Constitution of 1960 established a federation of Pakistan who was two provinces of East Pakistan and West Pakistan. Rigid constitution rigid था. Method of amendment was very difficult. Fundamental rights. The Constitution of 1962 grants certain fundamental rights of citizens of the Sun are basic human rights which cannot be taken away. Even legislation in normal circumstances. Referendum. The Constitution of 1962 has introduced a new institution of referendum. Indirect election. Under the Constitution of 1962, the method of direct election by adult franchise has been abolished, and method of indirect elections was adopted। in elect method ख़त्म करके indirect elections का अडॉप्ट किया गया था। Presidential form of government. The Constitution 1962 was provided presidential form of government in the country. Preamble. The objective resolution of 1949 was included as a preamble in the Constitution of 1962. Preamble ये थी कि the object resolution of the 1949 was included as a preamble in the Constitution of 1962. Unicameral. The Constitution of 1962 adopted single house parliament known as a National Assembly। यानी कि इसमें एक ही हाउस था, यूनिकैमरल बाईकैमरल नहीं था, जिसमें दो हाउस होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। इसमें नेशनल असेंबली ही मुतारिफ कराई गई थी। बेसिक democracy. The new system of basic democracies was introduced in the Constitution of 1962. The elected basic democrats members constituted an electoral college who elected the president। Independence of judiciary. 62 के कानून कॉन्स्टिट्यूशन में gave many power to the judicial and recognize the independence of judiciary। Rights of minorities. Minority was given rights and the rights were also protected by the constitution। Islamic way of life. The Sharia was declared the basis for the legislative system of Pakistan। It was declared that Islamic way of life shall be adopted। इनके शरिया को डिक्लेयर ऐलान किया गया था कि लेजिस्लेशन सिस्टम पाकिस्तान में जो वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के मुतालिक अडॉप्ट किया जाएगा। कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें कहा गया था प्रिंसिपल पॉलिसी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। नेशनल लैंग्वेज उर्दू एंड बंगाल वर डिक्लेयर टू नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के दो हिस्से, एक बांग्लादेश और उर्दू, तो दोनों में कौमी ज़ुबान बांग्लादेश की बांग्ला रखी गई थी और पाकिस्तान की उर्दू। तो बाद में कुछ मसाइल के तहत बांग्लादेश अलग हो गया था, जो कि अपने एक अलग पहचान बना ली, पाकिस्तान से टूट गया था। एलिमिनेशन ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस। All those rape practices which were contrary to Islamic teaching, such as gambling, prostitution,
divination, and adultery would be eliminated from the society. इन गैम्बलिंग प्रोस्टिट्यूशन जो कि सोशल इवल्स में आते हैं उनको मना कर दिया था। नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है इनको अलाउ नहीं किया गया था। Conclusion ये है कि I can say that the Constitution of 1962 introduced a very important change in the governmental system of Pakistan. It had provided presidential form of government. The method of election was indirect. It adopted principle of policy, but this constitution was failed because it was against the wishes of the people.